Hello, my dear students, and welcome to lecture number 6. This is lecture number 6 of the first chapter of your physics of class 9th, which is measurements and experimentation. In the previous lecture, that is in lecture number 5, we discussed about some derived units, okay, of different physical quantities. Derived units of some physical quantities. We had discussed about various units. Okay, it was a very important lecture. If you have not watched it, and even if you have not watched any of the previous lectures, then you should watch them before proceeding with lecture number 6. The link of the playlist, which contains all the previous lectures, is given in the description box of this video. You can click on that link and you can straight away go to that playlist, right? So let us continue with lecture number 6. So see what we are going to learn in the first topic today. Guidelines for writing the units. ये जो units हम यहाँ लिख रहे हैं, we learned different units, right? Just try to recall what we learned. We learned that power का unit is watt. Okay, जो basically joule per second है, उसको हम छोटा करके हमने लिखा watt. And joule per second is also basically it is kg meter square per second cube. And I have discussed how these all came. All right. In the previous lecture. अगर previous lecture को नहीं देखे हो तो you should definitely watch it. Then only you proceed with lecture 6. Similarly, for pressure, we discussed that it is Newton per meter square, which is also known as Pascal. Ampere second is for electric charge, which is shortened to Coulomb. Okay, so these are the different units that we have studied for various different physical quantities. We had studied different units. Now, children, there are certain rules for writing the units. All right, what are the rules that we are going to learn? The first rule says the symbol for a unit, which is not named after a scientist, is written in small letter. If you see, if Newton is considered Newton, then Newton is the name of a scientist. So whenever we are writing the word Newton, we have to write the n small when we are using it as a unit, not as the name of the scientist. And if we are using the symbol of Newton, then n should be capital. So यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई ऐसा symbol which is not named after a scientist is written in small letter. But if it is named after a scientist, then that symbol will be in capital letter. Symbol की बात की जा रही है. Only the symbol, not the word. So if the symbol is there and that symbol is named after a scientist, then it should be capital. Like Newton, like Joule. Joule का symbol क्या होता है? Capital J. We don't write small j because Joule is also the name of a scientist. But if you write the word Joule, then J will be small. Okay, this is something I discussed in previous lecture also. So this is the first point, that an example also is also given. Meter. Meter is not the name of any scientist. And उसका जो symbol होता है वो M होता है. And we do not write like this, capital M. We write small m. Because meter is not named after any scientist. Similarly, for second, it is S. We don't write capital S. For kilogram, it is kg and it is small k and small g. Okay, so these are the symbols of those units which are not named after a scientist. So they are small. The second point is just the opposite. The symbol of the unit which is named after a scientist is written with first letter of his name in capital. Okay, like the example I gave just now. Newton, N for Newton, J for Joule, W, capital W for watt, P, A for Pascal, but you see the P is only capital क्योंकि यहाँ पर इसने clearly बोल दिया है the first letter of his name in capital. In certain cases, we write the second letter also, like Pascal के case में we don't write only P, it is PA, and that is taken by convention. Scientists have decided upon this that we will write PA. But obviously, even if we take two letters of the name of the scientist is basically Pascal. So the two letters of the name has been taken, but the first letter is only capital. The second letter is small. Okay. And similarly for Hertz, HZ. C for Coulomb. Coulomb is also the name of a scientist. Hertz is also the name of a scientist. Volt is also the name of a scientist. So if you see the letters, the symbols for their units, for these units, they're always capital letter because these are named after scientists. Simple. अभी जो full form की बात मैंने बताया, so you see the full form of the unit, irrespective of the fact whether it is named after a scientist or not, is always written with a lower initial letter. Lower initial letter. जैसे मैंने अभी भी बताया, न्यूटन अगर word में लिखोगे full name का मतलब पूरा word, तो n should be small.
वॉट अगर लिखोगे, अगर एज अ यूनिट यू आर राइटिंग W शुड बी स्मॉल, WATT लिख रहे हो, पूरा वर्ड लिख रहे हो, W शुड बी स्मॉल. सिमिलरली पैस्कल का पूरा वर्ड लिख रहे हो तो P शुड बी स्मॉल व्हेन यू आर यूजिंग इट एज द यूनिट एंड नॉट एज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. नाउ दिस इज नॉट ओनली विद द यूनिट्स विच आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट. वैसे यूनिट्स के लिए भी ये रूल फॉलो करना है विच आर नॉट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट. जैसे मीटर, मीटर में अगर पूरा वर्ड लिखोगे तो METRE, तो वी डू नॉट राइट मीटर लाइक दिस, M कैपिटल नहीं लिखना है. So irrespective of whether it is named after the scientist or not, वो चीज लिखा हुआ है irrespective of, मतलब it does not matter whether the unit is named after a scientist or not. We don't have to, you know, see that. Any unit, if it is, if we are writing the full name of it, then it must begin with lower initial letter. Like the unit of mass is kilogram and it is not written as kilogram with K capital, ये गलत है, इसलिए यहाँ लिख दिया it is not written as. Similarly, the unit of length is meter and not written as M capital meter. Similarly, for Newton, it is written like this and not as capital NEW. So these are all wrong. But if you write capital N, what does it mean? इसका meaning अलग हो जाता है. When you are writing capital NEWTON, it is no longer a unit. It is the name of a scientist. Name of the scientist. जिस scientist की हम बात करें, आइजैक न्यूटन, उसका नाम हो गया ये. अगर हम unit mean करना है तो हमें small से पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा. यूनिट ऑफ एनर्जी इज रिटन एज जूल एंड नॉट एज कैपिटल J. देख लो यार, सिंपल सी बात है. पावर का यूनिट इज रिटन एज स्मॉल WATT एंड नॉट एज कैपिटल WATT. सिंपल बात है, बहुत इजी है. नाउ कमिंग टू द फोर्थ रूल. फोर्थ रूल सेज अ कंपाउंड यूनिट, मतलब विच इज अ बिग यूनिट, is formed by multiplication of two or more units written after putting a dot, cross or leaving a space between the two symbols. जैसे न्यूटन मीटर हो गया, इट इज अ कंपाउंड यूनिट, दो से ज्यादा यूनिट्स को मिलकर बना है. न्यूटन इज अ यूनिट, मीटर इज अ यूनिट. तो इसको लिखने के तीन तरीके होते हैं. वी जनरली फॉलो दिस थर्ड नोटेशन, third way of writing. The first is that you put N and a dot and M. Dot is indicating multiplication. Okay. So Newton meter को ऐसे लिख सकते हो या फिर Newton into meter लिख सकते हो. And what we generally follow, okay, in the book you will see in most of the places that it is Newton space meter. Okay, sometimes we don't even give a space, we just write Newton meter without a space, but more conventionally giving a space between Newton and meter is correct. So this is how we generally write. Okay, similarly जैसे यहाँ ampere second, ampere second तुम्हें दिख रहा है A और S के बीच में गैप है, ampere space second, because it is a compound unit. You can also write like this, ampere dot second या फिर ampere into second, सब same चीज है, all three are same. But this is more common, ampere space second, this is more common. Okay, we'll follow this. Negative power is used, the fifth rule, negative power is used for compound units which are formed by dividing one unit by the other. देखो ये चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था. आई विल अगेन डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. आई डिस्कस्ड इट विथ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन. लाइक यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया मीटर पर सेकेंड, वी रोट इट मीटर सेकेंड के ऊपर -1, मीन्स नेगेटिव पावर कर दिया हमने. डिनोमिनेटर का पावर को हमने एज अ नेगेटिव पावर ऑफ द डिनोमिनेटर लिखा हमने. जैसे यहाँ पर है मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड. इफ यू सी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, दिस इज एक्चुअली मीटर पर सेकेंड और नीचे एक और सेकेंड है ना. दिस सेकेंड इज दिस सेकेंड एंड दिस सेकेंड इज दिस सेकेंड, 2 सेकेंड है. तो बेसिकली इट इज मीटर, ध्यान से देखो तो इट इज मीटर एंड नीचे 2 बार सेकेंड मल्टीप्लाइड है तो सेकेंड स्क्वायर. तो इसको हमने क्या लिखा, मीटर एंड पावर में -2. आई एक्सप्लेन दिस इन द प्रीवियस लेक्चर, तो इसमें मैं अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं. जैसे 1/2 इज फॉर फ्रीक्वेंसी एंड ये सेकेंड नीचे आ गया, सो वी आर राइटिंग इट एज सेकेंड टू द पावर -1. ये सारी चीजों बहुत सिंपल है, वी डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस लेक्चर. तो वही चीज लिखा हुआ है, नेगेटिव पावर इज यूज्ड फॉर कंपाउंड यूनिट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग वन यूनिट बाय द अनदर. डिवाइडिंग मतलब डिनोमिनेटर में जो है वो पावर में नेगेटिव आ जाएगा उसका. ठीक है, सिंपल. The sixth rule says a unit in its short form is never written in plural. अच्छा, short form में अगर मुझे like 10 meters लिखना है, so meters is a plural. When you are writing the full word, it is okay, you can write meters, no problem. But when you are writing the symbol short form, then you cannot write 10 meters. ये s डाल दोगे तो ये meaning ही change हो गया, because ms is now millisecond. M, if you remember, small m is a prefix which is milli.
एंड एस इज फॉर सेकेंड। तो ये लग रहा है कि मिली सेकेंड तुमने लिखा है, दिस इज 10 मिली सेकेंड, लेकिन तुम मीन तो करना चाह रहे थे 10 मीटर्स, तो गलत हो गया, सब गड़बड़ हो गया। सो यू आर नॉट अलाउड टू एड एस, प्लूरल करने के लिए एस नहीं करना है। 10 मीटर ऐसे लिखना है 10, और इसको पढ़ेंगे 10 मीटर्स, यू कैन रीड इट एज 10 मीटर्स, नो प्रॉब्लम, बट लिखना है 10 m। सिमिलरली 20 kgs, यू विल नॉट राइट 20 kgs, ऐसे नहीं लिखना है, गलत है, 20 kg ही लिखना है, kg। 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस ऐसा नहीं लिखना है, इट इज मीनिंगलेस एंड कंप्लीटली रॉन्ग। तो एस ऐड नहीं करना है प्लूरल को, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, you don't have to add s. Clear? The seventh rule says to avoid powers of 10 in magnitude of a quantity, prefix can be used with its unit, but a unit must not be written with more than one prefixes. Yes, more than one prefix we are not allowed to use. See, हम जानते हैं कि मेरे prefix का क्या रोल है, we have already discussed। देखो पिछले लेक्चर में मैंने prefix के ऊपर काफी important explanation किया था। If you see, we have discussed, you know, prefixes, small and for big measurements, दोनों का। If you see, I'm just going back to the previous slides which we discussed in the previous lectures. अगर इन lectures को sincerely follow करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, because we are doing the entire thing in a very good, you know, proper sequence. अच्छा, जैसे for example, children, of this, if I have 2000 gram, ओके 2000 ग्राम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं चिल्ड्रन? 2000 इज बेसिकली 2 into 1000 ग्राम, isn't it? 2000 means what? 2 into 1000 gram, and 1000 means what? We have just seen 1000 मतलब 10 to the power 3, and 1000 means किलो, इसके लिए यूज करते हैं स्मॉल k। सो बेसिकली ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये जो 1000 है इसका मतलब ये 10 टू द पावर 3 है, एंड 10 टू द पावर 3 के लिए हम k यूज करते हैं, तो इसके लिए हमने k यूज कर दिया, k इज बेसिकली अ प्रीफिक्स, एंड ग्राम के लिए ग्राम, इसलिए 2000 ग्राम इज नथिंग बट 2 kg, 2 kg, राइट? नो डाउट, नो डाउट, सिंपल। ये तो हो गया, इस तरह से हम प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन दिस पॉइंट। एक बार उस पॉइंट को पढ़ो, यही चीज यहां पर कहा गया, यहां पर लिखा हुआ है कि प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद इट्स यूनिट। जैसे यूनिट था ग्राम और उसके साथ हमने प्रीफिक्स लगा दिया के, तो किलोग्राम हो गया, इट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहता है? बट अ प्रीफिक्स मस्ट नॉट बी रिटन विद मोर देन वन प्रीफिक्सेस, बट अ यूनिट मस्ट नॉट बी रिटन विद मोर देन वन प्रीफिक्सेस। अंडरस्टैंड दिस। सपोज वी हैव 2000000 kg, इतना, या फिर ग्राम। So this is a big number, ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million. So it is 2 million grams. 2 million grams, right? 2 million grams है। तो ये जो 2 million grams है, इसको अगर हम प्रीफिक्स में, इतना बड़ा नंबर है, इसको हम शॉर्ट में प्रीफिक्स का यूज करके छोटा कर सकते हैं। So it is basically 2 into 1000,000 grams, right? This is the same thing which we did in the previous example. हमने क्या किया कि इसको 2 into 1 million is ones, tens, 100, 1000, 10,000, million. Yes, so 2 into 1 million is this 2 million, isn't it? Clear? This is 2 million. 2 million can be written as 2 into 1 million, this many grams. Now if you do it in this way, देखो करेक्ट चीज क्या है कि दिस इज बेसिकली 2 into 10 to the power 6 grams, ये तो 10 to the power 6 है, एंड करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इज कि 10 to the power 6 को हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? यू जस्ट सी, 10 to the power 6 को हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं? 10 to the power 6 के लिए हम यूज करते हैं मेगा, ओके, मेगा। तो बेसिकली दिस इज 2 मेगा ग्राम, बिकॉज दिस 10 to the power 6 यानी 100000, 1 के साथ 6 0 is nothing but mega, तो this is 2 megagram। तो तुमने एक ही प्रीफिक्स यूज किया, this is absolutely correct। but if a child thinks like this कि सर ने तो कहा है कि हम प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, तो ये जो मेरे पास 2 million grams है, इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है 2 into 1000 into 1000 ग्राम, एक ही चीज है ना। 2 into 1000 into 1000 is nothing but 2 million, है ना। टोटल नंबर ऑफ जीरोस तो देखो 3 zeros and 3 zeros, तो टोटल 6 zeros है। तो अब कोई बच्चा अगर सोचे कि 10 to the power 3 मतलब ये 1000 का मतलब तो सर किलो होता है, तो यहां पर हम 2 किलो और फिर से एक
किलो, तो 2 किलो, किलोग्राम, 2 बार प्रीफिक्स यूज कर दिया, ऐसा नहीं करना है। यू आर नॉट अलाउड टू यूज मोर देन वन प्रीफिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट मस्ट नॉट बी रिटन विद मोर देन वन प्रीफिक्सेस। लाइक किलो मेगावाट, ये गलत है, किलो मेगावाट नहीं यूज कर सकते कि किलो भी यूज किए मेगा भी यूज किए, नहीं, उसके लिए। सो हियर वी नीड टू बी केयरफुल। व्हाट इज द eighth point telling us? When prefix is used with the symbol of unit, the prefix and symbol combined becomes the new symbol of the unit. Understand this, very simple. Suppose you have किलोमीटर क्यूब, जो एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है किलोमीटर क्यूब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मीटर पर क्यूब है, इसका मतलब ये भी है कि इस किलो पर भी क्यूब है। इफ किलोमीटर क्यूब इज देयर, you should not think कि that it is only cube on this meter। अगर ऐसा सोच लो कि ये जो क्यूब है ये सिर्फ मीटर के ऊपर है, किलो के ऊपर नहीं है, then that is wrong। किलोमीटर क्यूब इज बेसिकली किलो के ऊपर भी क्यूब, मीटर के ऊपर भी क्यूब। किलो का मतलब क्या होता है 1000, एंड मीटर का मतलब तो मीटर, ओके। सो इट इज किलोमीटर क्यूब का मतलब पूरा 1000 और मीटर होल क्यूब, यानी ये 1000 के ऊपर क्यूब आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वन, बेसिकली इट इज 10 टू द पावर 3 मीटर। इसके ऊपर क्यूब आ गया तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9, 3 into 3 is 9, है ना? आर यू गेटिंग इट? ये 1000 को मैं 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, फिर मीटर है, और इसके पूरा होल ब्रैकेट में मैंने 3 लिखा पावर में, सो इट इज 10 टू द पावर 9 मीटर क्यूब। इट डज नॉट मीन 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि किलोमीटर क्यूब सिर्फ मीटर पर क्यूब है, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा सोचोगे तो क्या गलती हो जाएगा, किलो का मतलब तो सर 10 टू द पावर 3 होता है, एंड मीटर क्यूब तो मीटर क्यूब हो गया। सो दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो पावर 3 है ये किलो पर भी है, तो किलो पर अगर पावर 3 होगा तो ये 10 टू द पावर 9 हो जाएगा मीटर क्यूब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए हमेशा होल पावर लेना है। कुछ एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यू हैव मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसे है मिलीमीटर स्क्वायर, तो मिलीमीटर का मतलब कि सिर्फ इस मीटर पर स्क्वायर नहीं है, इस मिली पर भी स्क्वायर है। मिली इज 10 टू द पावर -3, मिली इज 10 टू द पावर -3। तुम्हें याद नहीं होगा तो पीछे देख लो, स्मॉल m एज अ प्रीफिक्स इज मिली, देखो स्मॉल m इज मिली एंड मिली मीन्स 10 टू द पावर -3, ठीक है? सो मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर, और इसका पूरा का होल स्क्वायर, सिर्फ इस मीटर का स्क्वायर नहीं, सिर्फ इस मीटर का स्क्वायर करोगे तो गलत आंसर आएगा। इसका पूरा होल स्क्वायर क्या, 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर इज 10 टू द पावर -6 एंड मीटर स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर, दिस इज करेक्ट। लेकिन अगर बच्चा ऐसा सोचे कि मिलीमीटर स्क्वायर सिर्फ इस मीटर पर स्क्वायर है, तो वो तो ऐसा लिखेगा 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, एंड ये गलत हो गया, क्योंकि 10 टू द पावर -3 पर उसने स्क्वायर नहीं किया, हालांकि करना था। क्लियर? 8th point is clear. So with this we have learned about different guidelines that we need to follow for the units. Okay, ये सारे guidelines बहुत important है। अब next class में हम क्या करने वाले हैं, we will do numericals. We will select, we have already selected, we will discuss the numericals in the next class, a good number of numericals, this one, this one, this one, this one, and this one, and this one, and this one. So a lot of numericals we have to be discussed in the next class, and after that we will begin with the next topic, okay, of your lecture. Thank you, God bless you, take care.